boost the energy level, but also pave ways for better work. We are feeling more blessed and happy to host this auspicious occasion of 50 years, that is Golden Jubilee celebration of our Paramount High School, founded by our beloved late grandfather, Muhammad Safiuddin Farooqi Sahab. Do you think we should start the function without any delay? Yes, of course. Yes, of course, Mubina. But before we should start, we must get the blessings of Almighty Allah. Definitely. To recite verses of Quran, I would like to call Dawood, Siraj and Sohail on the dais. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यासीन। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी
warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Sohail. I am studying in 8th standard, and now I am reciting translation of Surah Yasin. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Yasin, by the wise Quran, Lord God, have been sent on straight path, sent on by the Divine, the merciful, so that we may warn a people whose father were not known to them unaware. Undoubtedly the word has been proved against most of them, so they shall not be. We have put on their next chant reaching to their chant, so they remain dressing up their faces. And we have set a barrier before them, and barrier behind them and covered them from above, therefore they see nothing. And it is equal for them, and whether you warn them or warn them not, they are not to blame. You warn only him who follows admonition, the fears most affectionate without seeing, so give him gladly of forgiveness and respectable reward. Undoubtedly we shall give glad and noting out what they have sent forward and what say they have left behind. More brighter, as we have great distinguished personalities with us. It's our privilege to invite honorable guest Janab Shujat Ali Sahab, IIS Deputy Director Doordarshan on the dais. I request Janab M.A. Bari Sahab to come and on the dais. Janab Akhtar Sharif Sahab, Chairman of Telangana Private Schools Forum, to come on the dais. I call upon Janab Mohammad Hamid Sahab, Cabinet Councillor, Siyasat Delhi, Hyderabad, and Janab Mir Yusuf Ali Sahab, NRI and a business tycoon, to come on the dais. Successful sailing of ship is joint effort of all the crew members, but the flag will be hoisted by the captain. Yes, Lubina, I totally agree with you. Now, I humbly request Mr. Zakiuddin Farooqi Sir, School Director, to come and welcome our today's chief guest. Hello. Assalamu alaikum. A very good evening. We deem it a great privilege on the occasion of Golden Jubilee Year celebration of our institution. We feel immense pleasure and honor to welcome our distinguished guests present on this occasion. On this occasion of Golden Jubilee Year, Paramount High School, we miss our great personality, my father, Muhammad Safiuddin Farooqi Sahab, who laid strong foundation to impart quality education. This institute has produced great persons. Today we have invited few ex-students and have excelled in their respective fields. Many more students have won laurel and accolade for themselves and our prestigious institution. We feel honored to welcome our chief guest Janab Shujat Ali Sahab, IAS Deputy Director Doordarshan, for gracing the occasion and enlightening our students, staff and all the participants. So your gracious presence and words of definite inspiration of students, staff and parents. We welcome you, sir, once again. On behalf of management and staff, I welcome Mohtarama Mumtaz Sultana Sahaba, Senior Advocate, for her august presence as guest of honor in today's function. We warmly welcome Janab Akhtar Sharif Sahab, Chairman of Telangana Private School Federation Forum, Janab Muhammad Hamid Sahab and Mir Yusuf Ali Sahab, NRI and a business tycoon, who have honored our invitation grace the occasion to encourage, inspire our students and be part of the historic and joyous occasion. Last but not least, we welcome the office bearers of various private schools, federations, correspondents, ex-students, parents, relatives, well-wishers, and my family members, included my beloved mother. Thank you. In achievements, we now warmly invite the great gracious lady, correspondent of Paramount High School, Mrs. Ghazala Zishan Farooqi, Headmistress, to present the annual school report. A very pleasant evening to one and all. Paramount High School started under the auspicious Paramount Educational Society by the sincere and humble efforts of our beloved late Mr. Muhammad Safiuddin Farooqi Sir, the founder, secretary and correspondent of Paramount High School in the year 1964. Mr. Muhammad Safiuddin Farooqi hails from a rich Jagirdar family from a remote village Madpalli in Karimnagar district, erstwhile Andhra Pradesh. There was only primary school in his village as he was
an extraordinary child in the family of lords and nobles, and judging his excellent educational capabilities, his family sent him to his uncle's house for higher studies, Government City College for senior secondary course, and then pursued his Bachelor of Arts from Osmania University. He was not just a meritorious student but also a man of principles. Although he hails from a rich and generous family, but he never asked money for his education and personal expenses, neither from his parents nor from his elders, but undertook tuition classes. During 1960s, in Hyderabad, there was widespread poverty, unemployment, epidemics and illiteracy, and there was severe law and order problems. Imparting of education was the most tedious job of that time. Money or finances were not constraints for Mr. Safiuddin Farooqi, sir. He could have started commercial business, but he chose to serve the society by uplifting their standard of education. He laid the foundation of Paramount Kindergarten, KG and Upper Primary School with just 8 students and a single teacher. The lucky first teacher was Miss Shahana Kausar, and she is profoundly known as Kausar Miss, to whom students still remember as the strict teacher for mathematics. During the second year of school, another 3 teachers were appointed: Rukmani, Shabana and Fatima. Another feather was added to the Paramount School with the appointment of Miss Suraya Jabin in the year 1966 as the new headmistress of the school of the Paramount High School, along with Mr. Safiuddin sir, and the teaching and non-teaching staff dedicatedly strived hard to help the students scale the ultimate heights of success. After a prolonged illness, our beloved Mr. Safiuddin Farooqi Sahab left us to the heavenly abode. May his soul rest in Jannatul Firdaus. Ameen. Ladies and gentlemen, dear parents and students, I request everyone to please stand in mark of respect to our beloved late Mr. Mohammad Safiuddin Farooqi sir, and kindly observe a minute of silence in honor of the departed soul. Yes, thank you. Be seated. After Mr. Mohammad Safiuddin continues, his beloved son, Mr. Mohammad Zakiuddin Farooqi, took charge as the new correspondent of Paramount High School. Paramount, as the name itself suggests, has produced many doctors, engineers, officials, businessmen and entrepreneurs serving in our society. The development of communication skills, curricular, co-curricular and extracurricular activities. Visits of subject experts, eminent personalities, exposure visits to various places of interest, participation in various competitive exams, competitions, etc. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Under the dynamic patronage of our beloved Zakiuddin Farooqi sir, the school is consistently progressing, and inshallah the day is not far when each and every Paramountian will put in their contribution to the development and prosperity of our country, community, society and country in particular. Today, Paramount High School is celebrating its 50th golden year. Golden Jubilee celebrations. This great journey of 50 years would not have been made possible without the consistent support and able guidance of all our former teachers, present teachers, students, parents and all our well-wishers. A big thank you for one and all for the encouragements and faith in us.
Our gratitude goes to the Almighty Allah for His grace and benevolence. Thank you one and all. May Almighty shower His choicest blessings upon all of us. Thank you. I present a memento to Muhammad Hamid Sahab. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा स्कूल के करता धरता जनाब ज़की फ़ारूक़ी साहब, मुमताज़ सुल्ताना साहबा, सफ़ी साहब मरहूम की रफ़ीक़ हयात मोहतरमा है जो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, किसी इदारे को 50 साल तक चलाना खुद अपने आप में एक कारनामा है और फिर 50 साल तक कामयाबी के साथ चलाना एक और कारनामा है। मैं इस इंतहाई खुशी के मौके पर न सिर्फ ज़की साहब की फैमिली को बल्कि आप सब सरपरस्तों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके ताउन की वजह से, आपके कोऑपरेशन की वजह से ये इदारा यहां तक पहुंचा है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का वो मशहूर मुहावरा याद आता है जिसमें उसने कहा था कि किसी कौम को तबाह करना है, नीस्त व नाबूद करना है, जिसे सफ़े हस्ती से मिटाना है, तो हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़बान छीन लो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मैं बड़े अफसोस के साथ और बड़ी रिसर्च के बाद बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो उर्दू मादरी ज़बान के हामिल इदारे हैं वो इंतहाई कन्वीनियंस के साथ उर्दू ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमारा ज़रिए तालीम ही उर्दू हुआ करता था, लेकिन आज बेशुमार अक़लियती इदारों में उर्दू बहैसियत ज़बान अव्वल नहीं पढ़ाई जा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा, ये रुझान जारी रहा, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट को याद करना पड़ेगा। हमारी जो तशख़्ख़ुस है, हमारी जो पहचान है, वो ख़त्म हो जाएगी। मैं गोल्डन जुबली के इस शानदार मौके पर ज़की फ़ारूक़ी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो न सिर्फ वो खुद बल्कि तेलंगाना स्कूल का जो फेडरेशन है, उनके तमाम अरकान इस बात का तहिया करें कि उनके मदरसों में उर्दू कम से कम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ऐसा होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना रियासत में उर्दू ज़बान तमाम के तमाम 10 अज़ला में सरकारी ज़बान का दर्जा पा चुकी है। बेशुमार एम्प्लॉयमेंट के मौक़े आपके सामने आएंगे और हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि चीफ मिनिस्टर ने अदालतों में और तमाम जितने भी दफातर सरकारी उसमें उर्दू ट्रांसलेटर्स की जायदाद को निकालने से इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन अफसोस है कि अगर हमारे पास उर्दू पढ़ने वाले ना रहें तो फिर तर्जुमा अंग्रेज़ी से उर्दू में कैसे होगा। इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी मैं हमारे साथी से बातचीत कर रहा था तो वो ये बता रहे थे कि इस मोहल्ले में जब मदरसे शुरू किए गए थे, सफ़ी साहब ने जब ये मदरसा शुरू किया था, उसके बाद में कई दूसरे मदारिस यहाँ पे आए, तो यहाँ के लोगों ने ये कह दिया था कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भिजाएंगे बल्कि उनको कारोबार से लगा देंगे। लेकिन सफ़ी साहब जैसी अजीम शख्सियतों की काविशों का नतीजा था कि आज बहुत सी बिरादरियों के बच्चे, जिसमें कुरैशी बिरादरी भी शामिल है, मदरसों का रुख कर रहे हैं। और उन्हें ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि कुरैशी जो ख़ानदान है और जो कुरैशी जो तबक़ा है वो इतना ज़बरदस्त फैलाव रखता है कि
हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी थे को अलग नहीं कर सकती। इस बात का मैं आपको दावे के साथ जमानत दे सकता हूँ। बहुत से स्कूलों में जब बच्चे हिंदू और मुस्लिम की इस्तिलाह में सोचते हैं तो टीचर्स का ये फ़र्ज़ है, पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि फ़ौरन उनको टोकें और बताएं कि इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत से बढ़ के कोई किरदार नहीं है। इस पर हमको सख्ती से कारबंद रहना है। जहाँ तक हमारी इबादतों का सवाल है, अगर हमारे हिंदू भाई मंदिर जाते हैं तो जाएं, मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं तो जाएं, ईसाई गिरजा में जाते हैं तो जाएं, और सिख अगर जाते हैं गुरुद्वारा में तो जाएं, क्योंकि मज़हब आपका शख्सी मामला है, समाज से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई शख्स ज़ाती फ़ायदे के खातिर समाज को बांटने की कोशिश करता है तो मेरी नज़रों में वो हिंदुस्तान का गद्दार है। गद्दारी इसी को कहते हैं कि लोगों के दिलों को बांटा जाए। अगर हम अपने लोगों के दिलों को जोड़ेंगे तो हमारा जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो मजबूत बनेगा। एक शायर कहता है कि भाई अगर आप जो है हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, कोई रोका नहीं है। तो एक शायर कहता है कि उधर मस्जिद, इधर मंदिर, उधर गिरजा, इधर गुरुद्वार, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, जहाँ चाहे वहाँ गिरजा, तुझे सजदे से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ गिरजा। तो सजदे की जो बात है, इबादत की जो बात है, उसमें कोई खैर नहीं है। आप उसे भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी शायर ने यह भी कहा है कि इंसानों में फ़िरका परस्ती कैसे आ गई जबकि परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं है। इसी बुनियाद पर वो कहता है कि परिंदों में कभी फ़िरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो मैं आज के इस खुशगवार मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपके इस इदारे को तरक्की देने के लिए, आपके बच्चों को कोई स्पेशल सहूलत हुकूमत से हो, मरकज़ से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, दिलाने के लिए मेरी हैसियत के मुताबिक कुछ काम मैं आपके लिए कर सकता हूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन एक ही गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे स्कूल में आएँ तो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आएँ, इल्म हासिल करने के लिए आएँ, अदब सीखने के लिए आएँ। किसी शायर ने यह भी कहा था कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, कफन होगा वरक़ अपना। तो मैं ज़्यादा अपनी बात को तवालत नहीं दूंगा, बहुत सारे स्पीकर्स आपसे मुखातिब होंगे, काफ़ी वक्त हो चुका है। फिर एक बार मैं ज़की साहब की फैमिली को, उनकी अहलिया को, उनकी वालिदा माजिदा को बहुत मुबारकबाद देते हुए ये ख्वाहिश करूँगा कि सफ़ी साहब ने जिस पौधे को यहाँ पर लगाया था, जो तनावर दरख्त में तब्दील हो गया है, इसको और भी मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें, काम करें और मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला जो लोग मायूस नहीं होते उनके साथ अल्लाह ताला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Lucid style of expression were veritable feast for our ears of the enthralled audience. It's a great privilege to have with us the Venerable Muhtarama Mumtaz Sultana Sahiba, Senior Advocate, for her presence as guest of honor in today's function. Ma'am, please share some thoughts with us. Chief guest Mr. Shujauddin Saab and member on the dais, parents, faculty and other children. I am honored and pleased to officiate the occasion of 50th Annual Day celebration of Paramount High School. I know Mr. Shafiuddin Sahab, who was the founder of this school, personally from so many years, and I know his wife also and his family, whole family, who is the founder of this school, who is taking care with very enthusiasm and very keen taking interest in the studies, all-round development of the children. Dear children, for achieving something, you have to work hard, whole day and night, till you gain the success. Doing some work and finishing it off doesn't matter. If you want to achieve something, that is goal, examination and everything, you have to work for the whole day. Only working till the homework is completed is not enough.
if you want success, you have to be work hard. Don't see whether it is important or it is unimportant. You have to work hard till you gain your success. Try and try until you succeed, until you reach your goals. So your parents are working hard, your teachers are working hard from day and night. That doesn't mean that you should not work. You have to make a target, that you have to fulfill the target, you have to reach the goal, and you have to reach that. This institution has been founded by Mr. Shafiuddin Sahab, who worked hard for the whole life for the upliftment of the children and for their education, better fulfillment of their everything in sports, education, everything. So we have to take care of all these things, that is education and every all-round development of the child, welfare of the child and everything. So once again I congratulate all the parents who have selected this school for their children better future, and I thank Mr. Shafiuddin Sahab who has taken this institution as a challenge for them. Thank you once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Chief Guest, Mr. Shujat Ali, Deputy Director of Doordarshan, respected guest of honors, school correspondents, my beloved companion Mr. Zakiuddin Farooqi, correspondent Paramount High School and Chairman of High Tech Federation, highly qualified faculty members, responsible parents, and last but not the least, their talented students. I would like to start my speech by recalling the golden words of Nelson Mandela. What he said, education is the most powerful weapon that can use to change the world. It's a great pleasure for me to have been invited here as a guest of honor. As we know that today we gathered here for the celebrating of 50 years Paramount High School. We have seen a few examples in Hyderabad that schools have been reached to this level. Today, we are witnessing that Paramount School, one of in their list. Of course, today we are missing the father of Mr. Zaki, legendary father, Mr. Shafiuddin, who was the one to start the foundation which now reached with golden heights and established with flying colors. Since Mr. Zaki has taken the responsibility of his father's dreams and he has proved his talent by taking this organization to a great heights and overcoming many challenges. Parents can give only a good advice
or can show you the straight path, but the final formation of a person creates only lies on their own hands. The responsibility and trust. What does it mean by responsibility and trust? Responsibility and trust are the character for leading a successful life. If you do your work in a responsible manner, you will automatically gain the trust. Teamwork. Teamwork is the word that people are successful. If you do your work on a teamwork basis, if you see that today's function is a teamwork, it won't be possible for only Mr. Zaki sir to handle this. He has used his resources, then only can possible. Like if you do the work as a team for our children will be successful. Responsibility. We should take care of our children on a responsible way. Institution is available, but the thing is, parents has to take the responsibility what they are doing their children. For example, if you send a servant for buying a raw material from the market, what they will do? When they comes, they open box and you will see what they brought it. The same thing if you do when your boy comes from the school, what they brought from the school. What is the raw material they brought it? The school is ready to give the material. Now it's turn of the parents that they should take care of your children. Then only can be successful boy. And my friends, the greatest day in our lives is when we take total responsibility of attitude. That's the day we only grow up. In order to inspire our students, a little bit more I would like to say. Mr. Margaret Fuller, what he said, if you are a reader, tomorrow you will be a leader. Once again, I would like to, I wholeheartedly congratulate Mr. Zaki and his team for the success of today's event, and also pray to Allah to show you even more in the race of life. Thank you and have a nice weekend. Bye. Assalamu alaikum. Most respected chief guest, Shujat Ali Sahab, IAS, Madam, Sir, सबसे पहले मैं पैरामाउंट स्कूल और पैरामाउंट स्कूल के करेस्पॉन्डेंट और सभी स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं और सभी पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं कि इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो आज आप सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक गोल्डन जुबली एक सेलिब्रेट करना किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन तक एक इंस्टीट्यूशन को लेकर आना, एक इंस्टीट्यूशन को तब तक संभालना, माशाल्लाह ये सिर्फ किसी एक आदमी या किसी एक टीचर के बस की बात नहीं है, बल्कि एक ग्रुप, एक टीम और एक बहुत बड़ी जुस्सजू की बात है। मुझे बताया गया था कि इस स्कूल में जो टीचर्स हैं
जो स्टार्टिंग फाउंडेशनल पिलर्स जो इसके स्कूल की जब बुनियाद रखी गई थी तब से अब तक वो टीचर्स अभी भी स्कूल के साथ स्कूल के डे टू डे फंक्शनिंग में वो आज भी मौजूद है। मैं सभी स्टूडेंट्स को और सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि इन टीचर्स को, ये टीचर्स के लिए और हमारे ज़कीउद्दीन साहब के लिए ज़ोरदार तालियां पेश किए। आज स्कूल के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हमारा पैरामाउंट स्कूल गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ दूधबौली, महाराजगंज, कामाटीपुरा के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से। यहाँ का जो तालीमी मियार था पहले, उससे बहुत ज़्यादा क़रीब से वाकिफ़ हूँ मैं। और जिस वजह से जो पैरामाउंट स्कूल के स्टाफ मैनेजमेंट जो दिन रात मेहनत किए, जो बेहतरीन रिज़ल्ट जो पेश किए, उसकी कोई जो है बेहतरीन मिसाल हम यहाँ पे आज दे सकते। मैं एक बार फिर सभी स्टाफ, सभी पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जो आज आप सब मिलके मुझे आज मौका दिए। और आखिर में मैं ज़कीउद्दीन साहब और सभी स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ इस गोल्डन जुबली मौके पर। शुक्रिया।